sit on that old porch, you and I. The crickets chirp, a lullaby so sweet, while the breeze sways the grass beneath our feet. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस मैं अभी मौजूद हूँ ओया में, जो कि कोस्टल पार्क है संतोरिनी का। तो जिस तरह कि मैंने कहा कि मैं इसका भी विज़िट कराऊंगा। अभी इवनिंग टाइम है, आप देख सकते हैं, और स्पेशली यहाँ पे ज़्यादातर लोग सनसेट देखने के लिए आते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी थोड़ी सी वॉकिंग टूर करा दूँ और साथ में जो फेमस प्लेसेस है वो भी दिखा दूँ। अभी ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम है, तो काफ़ी का मूड था, मैंने कहा थोड़ी सी पहले काफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये वॉकिंग टूर कराते हैं। बाकी बस आप लोग साथ रहें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। बड़ी प्यारी क्लास की जगह है, थोड़ा लेट आए यहाँ पे, अभी ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं इवनिंग का टाइम है। यहाँ पे बड़ी क्लास की, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरा यहाँ पे ये देखिए पीछे कुछ लोग फोटो वगैरह बनाएंगे, पीछे समंदर का व्यू भी आप देख सकते हैं। और बस तो गाइस आप लोग हमारे साथ रहें और ये ओया का जो विलाग है हमारे साथ एंजॉय करें, हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। और बस स्टे ट्यून्ड और एंजॉय द विलाग। काफ़ी पीने के बाद हम निकले थोड़ी सी वॉकिंग करने। मैंने सोचा आपको ये इनकी स्ट्रीट दिखाऊं। ये स्ट्रीट बहुत ही पॉपुलर है और ये बड़ी आइकॉनिक है। और ये जगह जो ओया है ये भी बड़ी आइकॉनिक आप कह सकते हैं टाउन है सांतोरिनी में। और दूसरा ये कि लोग यहाँ पे स्पेशली ये जो ब्लू चर्चेज़ हैं और वाइट इनकी आर्किटेक्चर और ब्लू चर्चेज़ इनके लोग आते हैं। और साथ में यहाँ पे जो स्टनिंग सनसेट का व्यू होता है इसको देखने के लिए लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं। तो दोस्तों थोड़ी टाइम के लिए हमने वॉकिंग की इसके जो कलरफुल स्ट्रीट थे ओया के संतोरिनी ओया के। तो यहाँ लाइक आपको बेहतरीन किस्म के व्यूज़ मिलेंगे। और ये देखिए काफ़ी प्यारा व्यूज़ आप ऊपर से देखते हो, समंदर और ये जो घर बनाए गए हैं और
बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेक्टेकुलर था। ये नज़ारा अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीनन आप फील कर सकते हैं कि कितना प्यारा है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक बेहतरीन स्पॉट पे जहाँ से आपको सनसेट का व्यू मिलेगा। अगर आप ओया जाएं तो इस प्लेस को और इस जगह को ज़रूर देख जाएं और वहाँ से सनसेट का व्यू एंजॉय करें। Down by the creek where the willow swings, I find peace at the end of my days. Golden hues paint the evening sky as I sit on that old porch, you and I. The crickets chirp, a lullaby so sweet, while the breeze sways the grass beneath our feet. With a mason jar of sweet iced tea, we watch the sun dip below the trees. Oh, sunset serenade, hold me tight in the arms of the fading light. The day's hard work fades away in your gentle twilight sway. Down by the creek where the willow swings, I find peace at the end of my day. गाइस यहाँ पे जो इवनिंग का वाइब है, वो जो यहाँ पे सनसेट होता है, उसके लिए पूरी दुनिया से काफ़ी लोग आते हैं। ये लोग देखे जो पीछे आए हुए हैं, ये इस व्यू को देखने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए, ये क्लासिकल व्यू, और आप कह सकते हैं कि ओया की पहचान है। तो इसको, ये जो आप कह सकते हैं, जब सनसेट ग्रुप होता है और यहाँ पे जो व्यू बनता है वो बड़ा क्लास का बनता है। और ये जो चर्चेज है वो भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो अगर आपको लाइफ में मौका मिले तो इस व्यू को लाजमी देखें और उसके लिए आए, और यहाँ का जो सनसेट का टाइम है उसको एक्सपीरियंस करें, और उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में स्पेशली इनके जो वॉकिंग टूर था वो कराना था, और दूसरा है कि यहाँ पे जो सनसेट का व्यू है वो दिखाना था। वो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी ओया 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 जो ये कोस्टल सिटी है, ये इसकी पहचान है। ये सनसेट के लिए लोग आते हैं, इवनिंग वाइब के लिए और रोमांटिक टाइम के लिए। तो चलो, बस मैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड करूँगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह पे, किसी और जगह के हवाले से। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में काशिफ को भी याद रखें, क्योंकि इस तरह के प्यारे प्यारे नज़ारे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए काशिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़। पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Golden hues paint the evening sky as I sit on that old porch, you and I. The crickets chirp, a lullaby so sweet,
while the breeze sways the grass beneath our feet. With a mason jar of sweet iced tea, we watch the sun dip below the trees. Oh, sunset